हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट क्लास में हम लोग ने हैलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया था। हमने इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था विद क्लासिफिकेशंस एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। तो द मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कंसिस्ट ऑफ थ्री मेथड्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अल्कोहल and from halogen exchange. Okay, so there are three methods to do it. तो पहला एक एक करके हम सब पढ़ेंगे, सब में सब टाइप्स भी हैं तो वो भी हम लोग देखेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. तो हमें पता है हाइड्रोकार्बन मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आर द मेन टू ब्रांचेस ऑफ इट. ओके, तो उसके अंदर सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो विच इज अल्केन, राइट? So in order to make alkyl halide from saturated alkane, saturated hydrocarbon which is alkane, it gives you the mixture of mono poly halogen compound. For example, this. अभी देखो, ये हम लोग ने ओल्ड क्लासेस में किया हुआ है. It's just a quick revision for you all. This is not given in your textbook, HSC textbook which is newly came. उसमें ये part नहीं दिया हुआ है. Okay, it's just a quick revision for you all. तो इसमें हमने क्या देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास एक अल्केन है विच इज मीथेन ओवर देयर. मीथेन में मैंने क्लोरीन डाला है. अभी एक क्लोरीन रिएक्ट्स विद CH3 to give CH3Cl and the other gives HCl. Okay, the same process starts repeating. It is a chain reaction. उसका प्रोडक्ट जो बना है रिएक्शन 1 का जो प्रोडक्ट है, it is the reactant in reaction 2, right? So this reactions get continue and we don't get the desired product. So अगर मुझे CH3Cl which is methyl chloride अगर मुझे चाहिए, but वो मुझे नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि ये series of reactions है, वो reactions ऐसे continue ही होते जाते हैं. Okay, so this method is not suitable because हमें एक desired product नहीं मिल पाता. Moving further, from unsaturated hydrocarbon, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला क्या है? Addition of hydrogen halide, for example HCl, HBr and HI, which is hydrochloric acid, then HBr, HI. Okay, अब इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखना. There is a unsaturated hydrocarbon, मतलब it is alkene or either alkyne. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया है, इथीन मॉलिक्यूल. ठीक है, इथीन में मैंने हाइड्रोजन हाइलाइट डाला है, फॉर एग्जांपल HCl. ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, CH3 CH2Cl बन रहा है. अभी कैसे बन रहा है विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो मूवमेंट्स ऑफ एटम्स देखेंगे हम लोग, एग्जैक्टली मूवमेंट्स ऑफ एटम्स क्या होंगे. तो अब यहाँ पे मेरे पास इथीन मॉलिक्यूल है, बराबर है, उसके साथ मैंने हाइड्रोजन हाइलाइड लिया which is HCl, हाइड्रोजन विद हाइलाइड. हाइलाइड फॉर एग्जांपल हियर Cl, मैंने उसको स्प्लिट कर दिया है H प्लस और Cl माइनस में. नाउ व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, बॉन्ड क्लीवेज होगा. CH2 में बॉन्ड क्लीवेज होगा. उसके बाद ये जो Cl है वो CH2 के पास चला जाएगा और ये जो H है वो इस CH2 के पास चला जाएगा. तो माय स्ट्रक्चर बिकम्स this CH3 CH2Cl. परफेक्ट. तो ये समझ गया सभी को यहाँ तक. तो हमने ये देखा कि ये हमारा दिस वाज अ जनरल रिएक्शन. ठीक है, वो बस मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में बनाया, बट इट्स अ जनरल रिएक्शन. ये भी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है. दे आर कंसीडरिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 11th स्टैंडर्ड, बट स्टिल आई हैव गिवन यू द. ये तो हमने देख लिया मैकेनिज्म. चलो, दिस वाज फॉर सिमेट्रिकल अल्कीन्स. ठीक है, अब यहाँ पे भी हम देखेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन्स पे ध्यान से देखना. सिमेट्रिकल अल्कीन समझो पहले क्या होता है. इट इज द बॉन्ड, द डबल बॉन्ड, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन and either side of the double bond you have same number of carbons, so it is a symmetrical alkene. ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है butene, वहां पे जो दो कार्बन है विच इज हैविंग डबल बॉन्ड, उनके इधर भी एक कार्बन है उधर भी एक कार्बन है, मतलब इट्स अ सिमेट्रिकल है. ओके, उसमें HI ऐड किया है तो इट इज नो कंफ्यूजन ना कि मुझे किधर
आई डालना है और मुझे किधर मतलब किधर हैलाइड डालना है या किधर हाइड्रोजन डालना है. इट इज वेरी सिंपल ना. अभी इधर भी हमने देखा कि H प्लस उधर उस साइड भी लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है. तो इट्स अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. Now we already know the rule which unsymmetry alkenes follow. We have already learned it in your 11th standard. And the rule is Markovitch's rule. We all know this. This is a very famous rule. Okay, so what this rule states is the negative part of a reagent goes to carbon having less hydrogen, and positive part of the reagent goes to the carbon having more hydrogen. अब ये तो हमें पता है ना. Positive part and negative part of a reagent in sense. अभी इस वाले स्ट्रक्चर में देखो H plus and Cl minus. So here Cl minus becomes the negative part and H plus becomes the positive part. Okay, this is clear, right? Let's see some examples. For this is unsymmetrical alkenes. Okay, so अभी इसमें देखो प्रोपीन का स्ट्रक्चर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. उसमें मैंने HBr डाला है. ठीक है. Now here in HBr, H is the positive part and Br is a negative part. अभी देखो Br कार्बन नंबर 2 पे अटैक किया है. ठीक है. In the first product isopropyl bromide 80%. Okay. Br gets attacked to carbon number 2 which is CH. Okay. So why this is happening? Because it is following the Markovitch's rule. Okay. In the next, you can see CH3C, CH3C, C double bond CH2, which is isobutylene. अभी इसमें भी देखो HBr में H is a positive part and Br is a negative part. अभी इसमें भी you can see कि this Br gets attacked here. C. Okay, because this is tertiary carbon. इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, लेस नहीं है ही नहीं, and H comes and attack here. This second product which you can see in your screen, it is the minor product. Okay, there are two possible products, which is this is the major product and this is the minor product. Okay, so we'll read the statement given below. The major product can be identified using Markovitch. Okay, if there are two products given. ठीक है, in exam समझो आपको दो प्रोडक्ट दिया रहेगा and then you have asked a question that identify which of these products follow Markovitch rule. So you need to understand what is Markovitch and which product is applying Markovitch rule. Okay, so both the examples follow Markovitch rule. We have already studied it, so nothing to get into more detail. Let's go further. And in the presence of peroxide, we follow anti-Markovitch rule. This also we are very well versed with. अभी structure में देखना, propene का structure we all know, HBr also we all know, we have used in the previous examples. अब इस structure में we are what we are using peroxide. Now peroxide N-propyl bromide. See, now what happened? This Br get attached to CH2. Ideally, it should attack to CH according to Markovitch. But now, because we are adding peroxide, the rule changes to anti-Markovitch. This also you all are knowing it, right? So if you are having any doubt regarding this, you can text me back. You can comment below. And we'll discuss simultaneously. Okay, so let's go to the next part, which is from alcohols. So from hydrocarbons, have you all understood from hydrocarbons what we have studied? Saturated and unsaturated. Saturated you don't have in your textbook. Okay, unsaturated they have mentioned that they are assuming that you are already knowing it. Still, I have mentioned the examples for your understanding. Let's move further from alcohols.
Now from alcohols also we are having three sub methods. The first one is reaction with hydrogen halides. The second one is reaction with phosphorus halides. And the third one is reaction with thionyl chloride, which is also known as sulfonide chloride. We'll be getting to it, what is the difference and all. Okay, so ये तीन पहले याद कर लेना कि अल्कोहल के साथ ये तीन है. So it's better for you all to make a flow chart, you know, and then you write, because ऐसे तो सब confuse हो जाओगे तुम लोग. But I have tried to make it bit simpler for you all. Okay, I'll send you the PPT, don't worry. तो पहले start करते हैं reaction with hydrogen halides. Okay, so this is the reaction with hydrogen halides. Now here we will be making alkyl chlorides. Okay, now here we will be making alkyl chlorides. अभी मेरे इस स्ट्रक्चर में देखो CH C2H5OH. C2H5, it is a ethyl group and an alcohol. So दोनों को मिक्स करो, it is an ethyl alcohol. Agreed everybody? अब मुझे alkyl chloride बनाना है, तो मैं हाइलाइट की जगह पे ऑब्वियसली है मैं क्लोरीन लेने वाली हूँ. तो मैंने ethyl alcohol लिया है with HCl, which is hydrogen chloride. Okay, now what I'm doing it in the presence of ZnCl2, which is zinc chloride. Okay, HCl and zinc chloride, concentrated HCl and zinc chloride is known as Lucas reagent. This is very important for you all. You have to learn this. So very well. Okay, हाँ. तो मैंने CH2OH HCl in the presence of zinc chloride, and you have to put the symbol of heat. Now what is happening? See, now you can see this OH and H are in different colors. I have put different colors in order to make you all understand that this OH and H come out by giving H2O, and this Cl and ethyl groups comes together to form ethyl chloride. So the main motive of our work is done. We were supposed to make ethyl chloride, and now ethyl chloride is formed by giving you water. So where this water came from? From OH of ethyl chloride, of ethanol, and H from HCl. Understood? This is not a rocket science. It's a very easy process. यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला. देखो मैंने यहाँ पे अच्छे से बताया भी है with using different colors so that you can understand. What is more important here is this process is also known as Groove's process. So exam में there is a probability they'll ask you write a short note on Groove's process, or this reaction would be given and they'll be asking name the reaction. So what you'll do, you have to remember that this process is known as Groove's process. Okay, I've added some important points in the PPT, otherwise you have to follow the textbook. Okay, it's not कि सिर्फ PPT देखा है, you have to follow the textbook as well. Let's move further. अभी देखो what is Lucas reagent, हमने already इस वाले slide पे देखा कि it is concentrated HCl plus zinc chloride. But अभी ये जो मैंने example इधर लिया था, it was primary alcohol, right? CH2H5OH. It is a primary alcohol. अभी यहाँ देखो, Lucas reagent is only used for primary and secondary alcohols only. So if in case आप लोगों को tertiary alcohol दिया है और उसमें आपने HCl और zinc chloride डाला है, so it would be a wrong. That answer becomes wrong because you have to remember this. Lucas reagent is only used for primary and secondary. This is mentioned in your textbook in one line only, but in last year textbook they have given the examples also. If you all want, I can share with you all. Okay.
So please tell me, then I'll share with you. तो याद रखना कि Lucas reagent is only used for primary and secondary. Okay. Similarly, for alkyl bromides, अभी हमने इस वाले प्रोसेस में क्या बनाया? Alkyl chlorides. Next हम क्या बनाने वाले हैं? Alkyl bromides and alkyl iodides. What is the difference? The difference is you have to take different reagents. That's all. Here you are taking HBr and HR. And why the process of removal of water remains the same. ठीक है ना? Ethyl alcohol से OH इधर से निकलेगा, H इधर से निकल के H2O. I hope it is clear, like दिख रहा है आप लोगों को, because the colors which I have used is a bit light, right? Okay. हाँ. One thing, the most important part in both the reaction is you have to remember the reagents used. Okay. For example, NBr plus H2SO4, heat, Ni. This considers the marks because here also we are using the same process. No? Removal of water and combining both the reagents is not a big deal. What is a big deal? You have to understand which reagents are used. Okay. Everyone getting it to me what I'm telling you all? So try to write as much as you can the reactions. Okay, let's move further. यहाँ तक समझा ना? It's nothing big deal. You are doing the OH as बाहर निकला, water निकला, and both the reagents are getting combined. That's it. Now reaction with phosphorus halides. Okay, what you do? यहाँ तक अगर बहुत हो गया है, pause the video, start revising the previous ones, and then start with phosphorus halides. Now, phosphorus halides, there are two types of halides, trihalides and pentahalides. You already know this. You have done it in inorganic chemistry in your 11th standard, right? हमने देखा था ना valencies कैसे phosphorus 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है. Yes. So अब इस पे देखेंगे हम trihalides और pentahalides. Trihalides is a general formula, हाँ. इसमें आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, R की जगह पे ethyl, propyl, butyl, whatever you feel is right for you. Okay. Now you have PCl3 and you have alcohol. What you will do? This अभी obviously यहाँ पे दिख रहा है कि this OH gets with P and इस Cl में 3 Cl है, उसमें से कोई एक Cl निकाल, उसमें से तीनों Cl इधर आ जाएंगे ना, because this is 3R ना, ये पूरा 3Cl यहाँ पे आ गया और बाकी का जो O3 है, H3 है, सब इधर आ गया ना. H3P था मेरे पास, OB3, H3PO3, phosphoric acid. Easy no? पेंटाहेलाइड्स में भी वही है. पेंटाहेलाइड्स में भी आपका देखो यहाँ पे 5Cl था, तो उसमें से एक Cl R के साथ आएगा, H के साथ दूसरा Cl gives you HCl and rest of them gives you the byproduct. What you have to do? You have to practice a lot about these things. This is nothing more. If you want me to explain it more, you can tell me it is not getting you, but it's easy, I think, right? Similarly for PBr3 and PI3. अभी यहाँ पे देखो, ये समझ गया? ये क्या बन रहा है इससे? मुझे अल्काइल क्लोराइड मिल रहा है ना दोनों प्रोसेस से. अब मुझे अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है. So this is this reaction. Write this reaction because this reaction is not given in your textbook, I guess. They have only mentioned कि PBr के लिए ये condition है, you'll get the same product. This entire reaction is not given in your textbook. So if possible, try to write this reaction as also. Okay. अब देखते हैं. अब मुझे अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है, तो मैंने PBr3 लिया है. ठीक है, Br3 लिया बिकॉज मुझे ब्रोमाइड ऐड करना है ना. आई कांट टेक Cl हियर. अब इसमें मुझे रेड फॉस्फोरस यूज करना है और ब्रोमीन वाटर यूज करना है. ऐसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एक सेंटेंस. यू आर सपोज टू यूज रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन in order to get bromide. Easy, right? And here you have to use red bromine with iodine. Easy.
OH is replaced with I, है ना? This OH gets replaced with I, and you get propyl iodine. It's easy actually, and you get phosphoric acid. Let's moving further. If you have understood this reaction with phosphorus halide, then only get further. Reaction with thionine chloride. Acha, this reaction is the best reaction because I'll tell you the reason. Because इसमें ना हमारा जो SO2 होता है ना, it evolves as a gas. अब यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया है, but I'm telling you this कि SO2 और HCl evolves as a gas. तो मेरा जो प्रोडक्ट है, it is RCl. Okay, so this is the best product ना, because मुझे जो desired product चाहिए वो मुझे आराम से मिल जा रहा है. So this is considered to be the best among the all. अभी ये कैसे हो रहा है? We'll be watching a video in the next slide. Try to see the video. If you are not understanding the video, don't get panic. I'll be sending that video on WhatsApp. Okay, on the group. Okay, if you are not understanding, if you are understanding, then well. Okay, let's see. Here is an alcohol, SOCl2, thionyl chloride. Now this Cl दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने. अब देखो ये एक H Cl के साथ जाके HCl दे रहा है, और ये O SO के साथ मिलके SO2 दे रहा है. इवॉल्व हो गया, ये O गया, H गया, S गया, O गया, एक Cl गया, एक Cl बचा, एक R बचा, तो क्या मिला मुझे? RCl. Got it? Everyone? Easy, no? If you want me to repeat the video, I'll repeat it once. देखो, ROH अल्कोहल लिया, थियोनाइल क्लोराइड, Cl को मैंने दो में स्प्लिट किया. ओके, अब ये एक H Cl के साथ जाके HCl देगा, एक O SO के साथ जाके SO2 देगा, एंड वो इवॉल्व हो जाएगा. बाकी सब यूज हो चुके हैं, बस एक Cl बचा है और एक R बचा है. वो RCl को एक साथ लिख सकते हैं ना हम. डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया. Got it, everyone? Moving with the last procedure of the day is from halogen exchange. Now, इसमें तो ये this is the simplest form. Okay, here you don't have to use brains also, because here the heading already itself says कि halogen exchange, exchanging of halogen. अभी देखो ये RCl में Cl is the halogen and Ni में I is the halogen. Okay, now see what's happened. Now see what happens. The Cl gets exchanged with iodine. Okay, so यहाँ पे क्या प्रोसेस मिल गया मुझे? Alkyl iodide मिल गया and NaCl. Now NaCl is a salt, so in the reacting mixture it will get deposit down. So जो मुझे desired product था, which is alkyl iodide, we get it very easily. Yes. So this reaction is known as Frankenstein reaction. Okay. So this reaction is mostly known for getting alkyl iodides. Okay. So this reaction is best for getting alkyl iodides. So ऐसा question आ सकता है, right or Frankenstein reaction. So you have to remember this reaction. अब कैसे याद करना है? Frankenstein reaction में सिर्फ alkyl iodide मिलेगा हमें. तो यहाँ पे तुम लोग कुछ भी डाल सकते हो. Okay, so let's move further. You can also form alkyl fluorides. Okay, अब alkyl fluorides कैसे बनाना है? देखो यहाँ पे मैंने RCl लिया हुआ है again. Now AgF, it is a metal fluoride, right? इसमें भी same process हो रहा है. There is an exchange of halogens.
This F gets transferred to here, this Cl gets here. Rf plus AgCl. Okay, easy. Now, instead of AgF, you can use these metal fluorides also. This reaction is known as Schwarz reaction. So this is important. The named reaction, Schwarz reaction, groove process, Frankenstein reaction. Okay, these are very important. You have to remember these process. Okay, these are the important steps. So this was all for the day. Thank you so much. And अगर कुछ भी doubt है, and if you want me to explain it, you can just comment down below. And if you are missing the previous video, you can check out the channel. You'll get that video as well. So yeah, thank you so much. And if you want this PPT, I can put it on the group as well. Thank you.